I think we're clapping because of Azhar Mahmood over here being with us, amongst the panelists. Wasn't really very vocal about England today. But imagine, guess what happened, ladies and gentlemen? One of the most highest partnerships ever recorded in a T20 World Cup is something we got to witness today. And England making their way to the finals of the ICC Men's T20 World Cup. Well, England didn't really win. I think they snatched it from India today. Well, there are so many words that we can use, but I think first things first. Pressure in a knockout game shows when you cannot step up to it. And today, there was a hailstorm in Adelaide, and it was proper. I think, I love stats, and I've said this to you. The average boundaries in a winning effort at Adelaide is 54.7. England scored 65.8% in boundaries, 13 fours, 10 sixes. No wonder winners are so quiet, Azhar. I mean, let's be honest. Why do you even need to say anything? Stay quiet. Oh. Before hailstorm. It was brilliant. It was brilliant. It was brilliant to see, like the way Butler started, to be honest, like first ball, there was slightly swing there, he come down the wicket, and we saw second ball, they put the keeper up, so suddenly put the pressure on the opposition. And the first over, hitting 3 boundaries, set the tone up front, and then, like the way they complement each other, Butler started really well, and then Hales came in to play, and then he took over, and towards the end, Butler again, 80 of both of them, I think 80 or I was so excited, like 80, of course you were. 80 or 49 and 86 or 47, like it's unbelievable, and the biggest partnership in world cricket. Amazing. Azhar Mahmood alongside Lance Gleesner, Rashid Latif and Mohammad Hafiz. We got so excited about introducing the panel, but I thought he deserved a special start to the show because we've been chirping him all tournament. I mean, he did, but I don't know whether, when Pakistan's going to win, who's going to clap for us or for him too. I think that'll be very confusing. I would always clap for you. Win-win situation, son. I think he'll be coming in with the studios with both the passports in hand, probably a Nikon. Probably. Well, he said he was going to save that for the final. But let's be honest. If you talk about Twitter trolls, nobody comes close to what Shahzad has just done on Twitter. Do you want to tell the audience what you've just done on Twitter? All right, sure. So obviously there's been a lot of speculation around Irfan Pathan's tweet. I'm very sorry. And, obviously we are lovers of cricket and fans of cricket. But he said that, even if you win or lose, grace is something which we might not have. So I think that the only thing I had to say to them, when you lose with 10 wickets, all you need to do is read it and weep. And please continue to do so, because we're in the finals, cannot even hear you now, because you're going back to Delhi. I think the first flight, you guys need to be back and work on your form. Coming back to Lance over here. Lance, what about you? What do you have to say today? Sure, what a treat, eh? I would say. What a treat. That was like a buffet that just got gobbled up, didn't it? Yeah, absolutely. We talk about 80-run partnership, 170-run partnership. What about that? But I just thought the batting today was top class, not just from England. I thought Kohli was fantastic, and the way Hardik batted as well was an absolute treat. I'm glad I didn't have to bowl on that surface. But again, when you talk about Kohli wanting to bat deep, he always says, if I'm there by the 17th over, I know I want to be there by the 20th over. How much runs could he have scored towards the end? Would a 185 total, for instance, Hafiz, put England under more pressure? Because this was a par total, and they definitely said, let's go out there and dominate that power play. Well, lots of things. Supporting India. Yeah, I was supporting India because I wanted them to play final with Pakistan. Yes. But anyway, whoever plays well, they deserve to be there. And I think England, my friend on the right side must be very happy that England really look like England we all know, like the way they played. But India, obviously, they have to blame themselves for this defeat. They can't go with any other thing, any other excuse just to blame themselves, because you cannot play the way they played. I'm little bit, my opinion is a little bit changed from my coach Zulu, because he's thinking Virat played a good innings. I feel he didn't play the good innings, because if you take 40 balls on a track like that, you need to take more responsibility. You need to shift the gear in certain stage of the game, where you have to get that runs which can challenge the England batting. But if you're giving 160, that is only happened because of the fireworks of Hardik Pandya. Otherwise, they could only get 150, 155, the way Virat played today. So that is very unrealistic from Virat, to be very honest, from my point of view. And I think he didn't play the way he should play. There should be 180 if you really want to challenge England.
but they couldn't get that, and they have to blame themselves. They only 4 down. How come you cannot get 180 on this track, which seen in the same after half an hour time, England batter was just hitting the balls everywhere. Yeah. So how come, like, when you was playing, you couldn't play those shots? So the pitch was same, conditions were same. It's just the way how you deal with it and how you wanted to take the game on. So I think they were behind the game, and that really caused them. And other part, they were missing Rohit Sharma's captaincy. I think I feel sorry for him, because in the Asia Cup we've seen he was underperformed. In World Cup he's surely underperformed, and it's not the Rohit Sharma, we already watched him. And then I think it's a place for Hardik Pandya, to me, from my opinion, that he should take that job as a captain of India and lead the side, not Rohit Sharma in future. And I think this is very obvious. Exactly. आपने अच्छी बात की, लेकिन यहाँ कोहली के हिसाब से आपने बात की, इससे पहले जो उनका एक अनफॉर्चुनेट कैच हुआ, जो कि लग नहीं रहा था कि शायद कैच होगा, उन्होंने भी यही सोचा होगा कि यार अगर मैंने डीप जाना है तो ऑब्वियसली मैं बाद में जाके बेहतर कर सकता हूं, और इस तरह की हमारे पास मुतअद्दिद मिसालें मौजूद है। जब आप डीप का सोचते हैं तो आप अर्ली ऑन ऑब्वियसली यू स्टे ऑन द क्रीज अ लिटिल बिट एंड देन उसके बाद यू चार्ज। लेकिन अगर हम कोहली के किरदार के ऊपर बात करते हैं, मुझे लगता है पांड्या ने सेम किरदार अदा किया, तो अगर दूसरे एंड से सेम किरदार अदा हो रहा था तो कोहली और मजीद क्या कर सकता था। इंग्लैंड के ऊपर आप 30 स्कोर और भी डालें कि यार ये काम था, 16 ओवर में उन्होंने अचीव कर लिया। शहजाद, जब आपने चेस करना है 169, जो कि आपकी रीचेबल जोन के अंदर आता है, और जब उसे 15 से 20 रन ज्यादा चेस करने पड़ते हैं तो आपका वो कंफर्ट जोन चेंज हो जाता है। तो आप जब कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? तो मुझे ये लगता है 4 आउट के ऊपर 169 ऑन दिस ट्रैक वाज नॉट गुड इनफ टू चैलेंज इंग्लैंड बैटिंग। और मुझे लगता है कि इनके 2-3 चीजें तो मिसिंग पार्ट थे ही, लेकिन ना तो इंटेंट नजर आया इनकी बैटिंग में, और इनके पास जो मिसिंग जो एक ऑप्शन थी वो थी इनका विकेट टेकर ऑप्शन। वो स्पिनर की शक्ल में मैं अभी भी हैरान हूं कि चाहल जैसा विकेट टेकर आपने पूरे टूर्नामेंट में क्यों नहीं आजमाया, और आप एक 5 या 10 रन की कंट्रीब्यूशन को लेके आपने उसके अश्विन और अक्षर को जो है वो कंटिन्यू किया, जबकि आपके पास दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है। तो मुझे लगता है समवेयर द प्लानिंग वाज नॉट राइट, एंड दे एज आई सेड कि उनको अपने आप को ब्लेम करना, ना कि किसी और चीज को। एग्जैक्टली। मैं राशिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, आज सुबह में आपने जो बात की थी, मेरा ख्याल है वो सबके सामने आया है कि दोनों टीम्स जो हैं वो रादर अपनी बैटिंग की वजह से जीती है, ना कि बॉलिंग की वजह से। अगर हम इंग्लैंड को कंसिडर करते हैं, उन्होंने 2 चेंजेस की, फिल सॉल्ट को लेकर आए और फिर क्रिस जॉर्डन को लेकर आए। क्रिस जॉर्डन जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, इवेंचुअली ही कम्स इन और वो जो इंग्लैंड को डिजायर्ड रिजल्ट था वो दिलवाते हैं, और इंग्लैंड उसके बाद भी वाकई एक जीत नहीं, ये तो छीना है, उन्होंने नवाला ही छीन लिया इंडिया के मुंह में से कि भाई ये आपका है ही नहीं, ये हमारा है, हम फाइनल खेलेंगे। आपके ख्याल में? इंग्लैंड की प्लानिंग अच्छी थी मेरे ख्याल से। जैसे एलेक्स ये टॉस जीत के बैटिंग करने का ना, ये आइडिया किसी को भी नहीं था जी। उनके ये प्लानिंग ना, ये टॉप पे ले गए उनको, और दोनों की बैटिंग स्ट्रांग थी, और जिसने टॉस जीता वो मैच जीत के ले गया। ये लीग मैच नहीं था, ये बॉक्सिंग का मैच था 10 ओवर का। 10 ओवर में इंडिया हार चुका था, उसके बाद 90 रन बनाए इन्होंने। बिल्कुल 90 रन 8 ओवर में बनाए, लेकिन वो इनफ नहीं थे। 169 रन जो भी थे इनफ नहीं थे। 10 ओवर में इंडिया मैच हार चुका था। अब आदिल रशीद ने कितने किए? 4। वहां पे स्पिन का जो 7 ओवर में कितने रन दिए? 6 ओवर में 41। बस देखो, कैलकुलेशन यही है ना। इंग्लैंड बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन से आया था इस मैच के अंदर। कोई सोच ही नहीं सकता टॉस जीत के वो क्या करेंगे। और रोहित ने क्या बोला कि हम टॉस जीत के बैटिंग करते हैं। बिल्कुल, यानी आप हरवाने ही आए थे टीम को। हफीज की बात ठीक है, कैप्टनसी का बहुत बड़ा इशू है। जिम्मेदारी, जैसे हम पाकिस्तानी के बोलते, जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। अब इस टीम की जिम्मेदारी कौन लेगा? सौरव गंगुली चला गया तबाह करके इस टीम। सर आखिर में लेकिन उनका कोच आया, उन्होंने फेस तो किया, मैंने नहीं देखा इस तरह कल्चर की। वो तो करना ही करना है जी। कप्तान वो नहीं लेगा जिम्मेदारी, ठीक है ना। मेंटल कोच भी आया हुआ है, 10 दिन पहले लेके आए हैं उसको, वो भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा जिम्मेदारी। जब विराट कोहली को कप्तानी से हटाया था पिछले वर्ल्ड कप में, 10 दिन पहले उसने बोल दिया कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। वो डे और आज के दिन है, फाइनल में इंडिया नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल ऐसे ही फाइनल में इंडिया नहीं पहुंची। आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन फॉर इंडिया टू। Can I say that there's a player done so well for England over the years, and in this tournament everyone spoke about him not picking up wickets, but not only did he pick up a wicket today, he went at 5 to the over. Adil Rashid, and bowling an over in the power play, coming in, and at the halfway stage you said we would have taken 168. I just wonder if India looked at the stats and thought no team has chased more than 158. So when we get 168 on the board, Bhuvi is going to take wickets, Ashdeep's going to do that, the spinners come in. Surely, Hafiz,
series from the way T20 being so dynamic that you've got to be able to plan for what if they take me on in the power play and I do not pick up wickets. That's what I'm saying. Like they were not ahead of the game. Indian batting, when they batted, they were thinking about 150, 160. The way Virat played, and to me, it's not right. You cannot hold yourself in T20 for that long. That if in the last 2 hours I will do something, I will bring a magic into the game. But the game basically in the first 6-7 overs, if you cannot take the game on, you always stay behind. So I think Indian batsmen have to blame themselves. Yes, they won many games for them, but this game surely belongs to them on for a losing cause. Yeah. Do you think that it needs to be the batters who needs to be blamed over here, or the bowlers rather? Oh, the batters have got to put runs on the board. I mean, I think surely, I mean, there's no sky. And I think that's the over-reliance on Surya Kumar Yadav, because I said this morning, what if he doesn't pitch up today? What are they going to do? I want one question from everyone. Yeah. We have seen Rohit Sharma as a player. Are we agreed the way he's playing in this tournament is the one we already watched? The talent he's justifying? I don't think it's just been this tournament. I think it's been the past 6 months. Absolutely, you're right. Even in Asia Cup, we've seen like in the conditions of Asia, he's not the way we already watched him playing his cricket. So I think the pressure of captaincy have taken a lot of flair of his batting away from him. So I think India management, whoever think tank behind, should think about it. The guy is ready, as I said. Hardik is there. We all love him as a fan of cricket because he brings that flair into this format. Yeah. So why not give a job to him? And if Rohit wants to continue, he should continue as a batsman, because when he plays well, he's the most fascinating batsman when he plays. And we'll come back to this as well. Azhar bhai, you wanted to say something? Look, if you see this, अगर आप इसको देखेंगे मैच को, I think they misread the condition. Because अगर आप देखें 2 मैच जो पहले हुए थे वो दिन के मैचेस थे, ठीक है, उसमें स्कोर करना मुश्किल था. उनके दिमाग में ये था कि 165 इज द पार स्कोर इन दिस पिच. ओके, सो ये पिच भी नया था, ठीक है. उसके बाद आप देखें कि सेकंड टाइम में फिर कल वाला काम हुआ, थोड़ा सा ड्यू आया, बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आना शुरू हो गया. आई थिंक द क्रूशियल टाइम जो था, जो अगर आप इंग्लैंड की बात करें कि वो कीप टेकिंग विकेट्स, अगर उन्होंने विकेटें लेनी शुरू कर दी, उसमें होता है अगर अपोजिशन की विकेट ही कोई नहीं गिरी, उसमें रन्स बनते जा रहे हैं, तो देन आप कांट कंट्रोल. अगर सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन खेल रहा है या हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन खेल रहा है, तो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते अनलेस कि आप उनको आउट करेंगे. यही चीज़ हमें देखने को मिली. अगर 2 मैच पीछे की मैं बात करता हूं, जो दिन के मैचेस थे, उसमें यह था कि बॉल नहीं आ रहा था बल्ले पे और वो रन्स बनाना मुश्किल थे. तो आई थिंक कि इंडिया जो है ना मिसरेडेड. और जो बात कर रहे थे हफीज के बीच में मिडल में, उन्होंने बहुत लेट चांस लिया क्योंकि उनकी विकेटें गिर चुकी थी. इस वजह से उन्होंने लेट चांस किया. उन्होंने कहा कि एंड में जाके हम इसको कवर अप कर देंगे, लेकिन कोहली का वो कैच हो गया उस वक्त, तो वहां पे वो चीज नहीं हुई. आई थिंक इन माय ओपिनियन दे वर स्टिल 20-25 रन शॉर्ट. वही बात जब आप के पास टारगेट होता है व्हेन यू चेजिंग 190 और व्हेन यू चेजिंग 165, तो उसमें ये होता है कि आपको जब 190 होता है तो आप हार जाते हो स्टार्ट में, जो है ना. अगर आपकी विकेटें गिर जाएं तो फिर आपको 10 रन की एवरेज करनी पड़ती है. तब भी वो हार्ड ही जा रहे थे. पहले ओवर में ही आपने 3 बाउंड्रीज का. लेकिन आपको यही है ना, तो उन्होंने पावर प्ले में गेम को एक साइड पे कर दिया. अगर स्पिन आके कोई रोल प्ले करता, जैसे उन्होंने देखा कि उनके स्पिनर्स ने रोल प्ले किया, जिसमें आदिल ने किया, लिविंगस्टन ने किया, तो वहां पे वो स्पिनर का रोल था. सुबह भी मैंने आपको कहा था कि स्पिन विल मेक अप. सुबह आपने बहुत कम कहा था. नहीं, मैंने जो मैंने आपको कहा था कि स्पिन का रोल होगा यहाँ पे, क्योंकि आप अगर चीजों को देखें तो उसको देखें कि स्पिन में हमें थ्रू आउट यहाँ पे मदद मिली है. ठीक है, शॉर्टर बाउंड्री है, लेकिन उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा. तो वहां पे आई थिंक हुआ. और फिर जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, पहले पावर प्ले में उन्होंने गेम को साइड पे कर दिया, और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है ना, कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं थी. सुबह जब बात हो रही थी तो चहाल की बात मैंने की थी, वो मैं हमेशा की थी यार. मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि आपको, अब देखें, मैंने सुबह बात की थी कि अगर इनकी विकेटें गिरेंगी तो इनको मुश्किल हो सकती है. बिल्कुल, क्योंकि आपका हार्दिक पांड्या 6ठे नंबर पे बैटिंग कर रहा है और 7वें पे आप अक्षर को खिला रहे हो इस चक्कर में कि वो हमें कोई रन्स करके देगा. जो मैंने पहले दिन बात की थी ना, जब पाकिस्तान का वेरी फर्स्ट गेम था, कि आपने बैलेंस देखना होता है कि
प्लस विकेट, अगर विकेट टेकिंग ऑप्शन आपकी होती है या आपको 10 से 15 रन चाहिए, तो वो वाला मिसिंग पार्ट लग रहा था मुझे इंडिया की बॉलिंग में। ठीक है, ये मिसिंग पार्ट पे मैं आता हूँ जी। सुबह आपने टॉस का कुछ बता रहे थे, कितने टॉस जीते हैं, क्या हुआ वो बताइए। जी, मैंने इसमें ये बात की थी कि जो 6 मैचेस हुए थे उनके अंदर जो टॉस जीत के जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है, बल्कि टॉस को जितने जीते हैं टॉस वो हारे हैं यहाँ पे। सबसे पहले 11 टॉसेज अगर आप जीते हैं तो उसके अंदर 11 के 11 मैचेस आप हारे हैं। आज चेंज हो गया, आज चेंज हो गया, आज बिल्कुल फर्क हो गया। बैटिंग पहले वाले ने बैटिंग पहले वाला जीता है यहाँ पे, बिल्कुल बैटिंग पहले वाला, ये उल्टा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये मान लिया, मैंने अपने से नहीं बताया था, जो हुआ है वो बताया था। नहीं मैं कंफर्म कर रहा था। नो प्रॉब्लम, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। Feels like a boxing match. I don't know why I feel like I need to be the referee. I just want to move on to Lance away. Lance, you know, there's been a lot of conversation even in India, that too about, you know, KL Rahul and Rohit Sharma not kind of rising onto the occasion when it's required of them. I think KL Rahul in particular, that, you know, whenever it's a bigger match, whenever it's a knockout stage, it's KL Rahul who's actually the first one to go back to the pavilion or dugout. Yeah, it is interesting. I mean, he's a fantastic player. I mean, there's no doubt about that, and he's probably, no, he probably is the guy that needs to open the batting with Rohit. Sometimes you do get to a point where you question performance in We have seen such amazing partnerships, and that too against India only, you know, so there must be a problem with their pace attackers, or probably when we speak about the spin. Yeah, you know, it's a tough one today because you almost felt as though that they left runs out there, and because of that, they allowed England to dictate the way the run chase went. At some stage, Joss Buttler was going to come good. All these things were going to always work out in England's favour as long as they were chasing a chaseable total. True. And that's just what it was. I mean, I just totally agree with Hafiz. If there was a 190 score on the board, even if they went after it and got to 63 without loss in the power play. Like, I strongly believe on this as a batsman. If I take 40 balls as a batsman, it's my responsibility to get to the power runs. It's not any other's contribution. Like, they went to the power runs only because of a fantastic inning of Hardik Pandya. I think he faced 30-something balls to score 60-something. Yeah, his strike rate was 190. Kohli's strike rate was 125. If he couldn't bring that firepower into the game, what it could be? It could be only 150. So what you were playing for? You was playing for 150? No. You cannot challenge England batting until you reach 190. So the intent was missing. Exactly. One last question. Yes, sir. Was he not batting like Kane Williamson today? Yeah, I feel like it. It reminds me the same. I think there's a lot of firework over here. Twitter troll is taking on, I don't know what's going on today. जैसे 91 रन दिए इनके 3 बॉलर्स ने, बात की हमने, इनके इंग्लैंड के 2 बॉलर्स ने 41 रन दिए 7 ओवर में जी, स्पिनर्स ने, और फास्ट बॉलर ने 127 रन दिए 9.78 से दिए। तो क्या इंडियन लेग स्पिनर को नहीं खेल पा रहे? ये क्वेश्चन मार्क उनके सेटअप के अंदर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या है यार, सूर्या कुमार खेल रहे हैं, रोहित खेल रहे हैं, केएल खेल रहे हैं, विराट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं। क्या वजह है कि रीड नहीं कर रहे या चांस नहीं ले रहे उनके ऊपर? इंटेंट। सबसे मुश्किल बॉलर जो इस मैच में खेला है ना, वो लिविंगस्टोन है। क्योंकि उसके रिलीज का नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं की भी। क्योंकि आदिल रशीद का पता है कि आप आंखें भी बंद कर लो, पता है कि यहाँ से आगे बॉल करेगा। लिविंगस्टोन का नहीं पता कि वो रिलीज कहाँ से करेगा और कितनी पेस पे रिलीज करेगा। और उसने स्ट्रक किया इंडियन बैटिंग लाइनअप को, अगर विकेट कोई भी नहीं ली, लेकिन अगर 3 ओवर में कितने रन दिए? 21 रन दिए। बहुत बड़ा फर्क है ये, बहुत बड़ा फर्क कि एक बैट्समैन जो खेल रहा है बैटिंग करने के लिए आया, क्या इन्होंने इसको अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया था, स्ट्रेटेजी प्लानिंग का हिस्सा बनाया था? क्या लेफ्ट हैंडर को बीच में भेज सकते थे यहाँ पे फायर पावर करने के लिए? अगर लेफ्ट हैंडर राइट आर्म लेग स्पिनर थे, कोई बीच में लेफ्ट हैंडर आया, आखिरी ओवर खेलने क्यों आया ऋषभ पंत? तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। और ये वाहिद टीम थी जिसके सबसे कम लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग करने आ रहे हैं, वो इंडिया की टीम है।